Hello, I'm Prasad Ramdas sir over here and welcome to my channel PR Edutech. In this video, I'm going to give you some tips or tricks regarding how to study physics of class 10th ICSE board. इतने सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को and I come across that student find certain difficulties in their studies. That's why I have made this video. So we are going to apply SMART technique. So let us understand what is SMART technique. See here, S stands for systematic planning. M stands for master the concept. A means ample practice for theory as well as numerical. आप सबको पता है कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स है, डेफिनेशंस है, तो ये सबका प्रैक्टिस करना है. दैट इज व्हाट ए मीन्स. आर रिवाइज एट अ रेगुलर इंटरवल्स. And T matlab test yourself. I'm going to discuss about all these steps in details over here. Let us see what is systematic planning is. The first step, set your goal. You have to decide how much marks you have to score. That is the first thing. Then you have to decide in how many months you are going to complete the syllabus. For that purpose, you have to understand exam pattern, question paper pattern as well as syllabus. And the third step is prepare the timetable for self-study. Let us see what is the exam pattern. See, there is a theory as well as practical. Theory paper is for 80 marks and practical is for 20 marks. So total marks will be 100. Question paper pattern. See, your question paper is divided into two sections, section A and section B. The section A contains short answer but compulsory questions. Okay, number of questions will vary. Generally, the first 15 will be multiple choice और बाकी का 25 marks के लिए 2 mark या 1 mark का questions will be asked to you. तो section A is for 40 marks और ये compulsory रहेगा. Whereas section B will be long answer but choice based questions. You will be given 6 questions out of which you have to solve 4 questions और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है. ऑफ कोर्स उसके अंदर सब क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, दैट सब क्वेश्चन विल बी आइदर फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. बट आउट ऑफ दिस 6 you have to solve any 4 and section B is also for 40 marks. तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल रहा है बट यहाँ पे सेक्शन ए में बिल्कुल चॉइस नहीं है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. Now let us see what is a syllabus over here. See, there are total 12 chapters. How many chapters are there? 12 chapters. They are divided into 6 sections. That is A, B, C, D, E and F. Remember, here chapter-wise marks are not provided by the ICSE board. So all the chapters are equally important. You can understand, you can do the calculation in this manner that there are 12 chapters, paper is for 80 marks. तो हर एक चैप्टर 6 या 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. बिकॉज अगर हम लोग 7 कैलकुलेशन के लिए लेते हैं तो इट विल बिकम 84 मार्क्स. तो हर एक चैप्टर 6 या 7 मतलब ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. सी हियर सेक्शन ए, इट इंक्लूड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी ओवर हियर. Okay, as well as machines are included. There are 3 chapters: force, work, energy and power as well as machines. तो ये तीनों मिला के 20-21 मार्क्स के लिए लगभग आएगा. Same thing is for light. Light में refraction of a light at a plane surface, that is going to be the case. Then refraction through lens and spectrum. Again 3 chapters are there, 20-21 marks. Sound only 1 chapter, so this will be around 7 or 8 marks. Okay, maybe 6 marks भी आ सकता है. Whereas electricity and magnetism, again 3 things are there: current, electricity, household circuits, electromagnetism. Again this will be there for 19-20 marks. Whereas heat, only 1 chapter, calorimetry 6 or 7 marks. Modern physics, only 1 chapter, radioactivity 6 or
7 marks. But try to understand all the chapters are equally important. The first thing, how to plan the study. तो सबसे पहला you have to understand the syllabus as well as exam pattern जो अभी हम लोगों ने देख लिया. So how many chapters are there? 12. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई चल रहा है. अपना एग्जाम विल बी समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. हर साल फेब्रुवरी एंड मार्च स्टार्टिंग दैट विल बी देयर फॉर द एग्जाम. तो टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन इज नियरली 4 months. दैट इज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. तो लगभग हाउ मेनी चैप्टर्स आई हैव टू प्रिपेयर? 3 or 4 chapters per month. So that I will be able to complete it by October. Okay. अगर चलो अक्टूबर तक नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास आगे का टाइम अवेलेबल है. ओके, नवंबर है तो नवंबर का 10 दिन आप लोग यूज कर सकते हो. बट देन रिवीजन के लिए थोड़ा कम समय मिलेगा. बट अगर हम लोग अक्टूबर में फिनिश करते हैं तो फॉर रिवीजन यू विल हैव नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज टोटल 60 days प्लस जनवरी का 15-20 दिन मिलेगा आपको. क्योंकि उसके बाद में कंप्लीशन ऑफ द जर्नल एंड ऑल अदर थिंग्स, प्रैक्टिकल वगैरह चालू हो जाएगा. तो एटलीस्ट यू विल हैव 40 to 50 days minimum, 40 to 50 days in your hand for revision and maximum 60 to 75 days for revision over here. So please understand this very well. रेगुलर अपने को स्टडी करेंगे तो ये पॉसिबल है. लास्ट स्लाइड में वी हैड अ डिस्कशन दैट हाउ टू plan the things. There are total 12 chapters. So अपने को 3 to 4 chapters you have to prepare in a month. Now it's a time to understand how to plan a day or a timetable, how to make it. The first thing while making a timetable you have to consider the school timings as well as tuition timing. क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ट्यूशन को भी जाते हैं, तो how much time you are going to spend over there, that you have to consider. Apart from that, you have to keep at least 3 to 4 hours for self-study. Now, this self-study includes the studies of all the subjects. It is not only physics, क्योंकि ये वीडियो अपना फिजिक्स का है. That does not mean कि खाली फिजिक्स का सेल्फ स्टडी करो, बाकी का भी सेल्फ स्टडी आपको करना है. You have to keep recreation and entertainment time. देखो इसका मीनिंग मैं आपको बोलता हूँ कि what it exactly means. देखो आज मैंने फिजिक्स स्टडी करने को बैठ गया तो पूरा का पूरा फिजिक्स आई हैव टू स्टडी इट विद इन 2 hours. ऐसा मत करो. You just study it for 45-50 minutes. Then you just leave your place, wash your face, something like that. If you want, you entertainment, matlab you hear some light music, just see, look at the road or something, just out of the window. But like 5-10 minutes, you come out of your studies. Then you start with the next subject over there. That is what I will suggest. But one more thing, you have to consider sleeping hours also. 8 to 10 hours का sound sleep is required from health point of view. This is a very important thing what we have to remember. Now let us see how to master the concept. सबसे पहला, read your textbook carefully. Textbook के जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है. In your case, you have some reference book also that you have to read. Make a notes. That is very important. अभी notes बनाते समय you have to highlight important point, definition and laws. Already textbook में those things were given either in the bold letters or in some another manner. Then you understand the derivation. Over here. Understand solved numericals in the textbook. अभी फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही, और आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं. हर एक फॉर्मूला के ऊपर कम से कम 3 or 4 न्यूमेरिकल्स आर देयर. तो एक चैप्टर के अंदर एटलीस्ट 15-20 न्यूमेरिकल्स विल कम अक्रॉस. तो आपका जो पेपर है उसमें भी न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बी कंपल्सरी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग द सॉल्व न्यूमेरिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला बुक. हर एक चैप्टर के अंदर एक कम से कम 5 to 6 फॉर्मूलाज विल बी देयर. तो आप एक छोटा डायरी ले लो, उसके अंदर फॉर्मूलाज लिखो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस. नाउ A stands for ample practice.
तो कैसे करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम बिकॉज एग्जाम में सर्टन डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंस का डायग्राम्स है, दे आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. दोज डायग्राम्स बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही है. ओके, नाउ प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स. बहुत बार हम लोग we read the answers, we try to by heart the things. Definition, law, the derivation जो है we by heart, no doubt. You have to read it 5 to 10 times till you remember. See, you have to understand the concept also. खाली गधा मजदूरी नहीं करना है अपने को. तो you have to understand the concept, but you have to memorize also the things. क्योंकि उसके सिवा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है. क्योंकि ये जो लॉज है, डेफिनेशन है, you can't use your own words. क्योंकि अगर वर्डिंग चेंज हुआ तो मीनिंग भी चेंज हो सकता है. तो राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल. देखो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, दैट यू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ दे हैव सॉल्व्ड इट. बट एक्सरसाइज के नीचे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो भी रेफरेंस बुक आपका स्कूल यूज करता होगा उसमें. तो ऑल दोज न्यूमेरिकल्स यू ट्राई टू सॉल्व इट बिकॉज सिमिलर न्यूमेरिकल्स विल बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम. कि बहुत बार हम लोग ये बोलते हैं एज ए टीचर कि टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट मत करना. कॉपी पेस्ट मत करना इसका मतलब क्या? कि जब वैसे का वैसा मत लिखो, बट जब भी डेफिनेशन आएगा, लॉज आएगा, तो वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो वैसे ही होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें वन कैन से नंबर्स को चेंज करके सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड टू यू. फॉर एग्जांपल वर्क डन के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एंगल दिया गया है, उसको चेंज करके हम लोग न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. पावर में भी सेम चीज आएगा, खाली नंबर्स विल चेंज, क्वेश्चन का फॉर्मेट विल रिमेन सेम. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. ओके, you have to go with solved numericals also from the textbook. Now very important, avoid pressure. अभी प्रेशर किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरा फ्रेंड है, इसका इतना पढ़ाई हुआ, इसका इतना मार्क्स आ गया. रिमेंबर बच्चों, एवरी स्टूडेंट इज अ यूनिक. हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी रहता है, बट वी कैन इंक्रीज आवर कैपेसिटी, ओके, बाय डूइंग अ hard work, by taking some smart efforts. So day by day we have to start with the things and we have to take some efforts over there. But never compare, क्योंकि comparison की वजह से हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं and then we start avoiding the things. अपने को लगता है मैंने इतना efforts लिया but I am not getting the result. So remember, some students are very good in the beginning and some students will perform well at the end. तो अपने को constant study करना है. Okay, now remember you are unique. And सबसे पहला avoid distraction. मोबाइल को आप लोग avoid करना सीखो. Instagram, WhatsApp, then बहुत सारे YouTube channels, ये सब चीज़ों को you please keep it aside because they are distractions in your studies. When you start studying, जब आप पढ़ाई के लिए बैठो तो you give your mobile phones to your parents or keep it aside. अगला 2 hours, 3 hours, you should not receive any call so that you will be able to concentrate on your studies. Now here are the tips for solving the numerical. The first one, make formula book and memorize all the formulas. सबसे पहले मैंने बोला था कि एक डायरी ले लो, you write all the formula which you come across. अभी next thing you have to memorize, means you have to read them 5 times, 10 times. Then you are close your eyes and try to recall them, or try to see by writing whether you are able to write down the correct formula or not. That is the method. Now read the numerical carefully and mark the given information. The next thing, find what is given and what is to be calculated. Find the correct formula, substitute all the values with correct unit and get the answer, and solve all the numericals given in the exercise, given below the exercise.
तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि फॉर्मूला बुक बनाओ, देन यू रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन, ओके, देन व्हाट इज आस्क्ड, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला फॉर्मूला ढूंढो। तो सबसे पहली बार जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बैठोगे तो यू हैव टू कीप फॉर्मूला बुक अलोंग विथ यू। सेकंड टाइम प्रैक्टिस करोगे तो शायद से आपको फॉर्मूला बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अपना टेक्स्ट बुक जो है, अपना जो रेफरेंस बुक है, वो कोई भी रहेगा रेफरेंस बुक, बहुत ही अच्छा है। हर एक में कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल सबको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सो यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, दैट विल क्लियर योर कंसेप्ट। देखो न्यूमेरिकल्स में बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि नंबर्स आर गोइंग टू चेंज, वो न्यूमेरिकल कॉपी पेस्ट कोई करेगा नहीं, बट आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो you can use it very easily. Now, a very important thing, that is time management. So here remember total marks कितना अपना पेपर में 80 marks है, और how much time we are going to get 2 hours, मतलब 120 minutes. So let us see how much time I will get for solving 1 mark question. For 1 mark question it is 120 minutes divided by 80 marks का पेपर, मतलब हर एक 1 mark के लिए I am going to get 1.5 minutes। और अपना जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स रहेगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अपना 1.5 मिनट के अंदर होना चाहिए, 2 मार्क्स 3 मिनट के अंदर, 3 मार्क्स लगभग 4 to 5 मिनट्स के अंदर, और 4 मार्क्स 6 मिनट के अंदर। बेटा ये जो 3 और 4 मार्क्स है ना, वो लॉन्ग आंसर्स या डेरिवेशंस रहेगा। तो व्हाइल डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड। अपना जो डेरिवेशन है वो 5 to 6 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए। जब भी पेपर का प्रैक्टिस करोगे, फाइनल, प्रीलिम्स वगैरह, तो सेक्शन ए 40 मार्क्स अपना 1 आवर के अंदर होना चाहिए, सेक्शन बी 40 मार्क्स का अपना 1 आवर के अंदर सॉल्व करके होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इतना सब देखने के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड अ रिवीजन। तो राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन, तो उसमें you have to do the revision along with the preparation, सबसे important thing। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, बात करता हूँ, क्योंकि देखो अपना मेमोरी इज वेरी शॉर्ट मेमोरी, तो 2 दिन में हम लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए विद इन 1 मंथ अगर मुझे 3 चैप्टर 4 चैप्टर प्रिपेयर करने का है तो टाइम टू टाइम मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो वाई डूइंग द प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू रीड दैट आंसर से 5 times 6 times, मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी करके देखेगा, बट उसके बाद में भी मुझे उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन आई हैव टू डू अ रिवीजन। उसमें अपने को फॉर्मूला रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल्स भी। अभी न्यूमेरिकल्स पहली बार तो मैं सब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रिवाइज करने को बैठूंगा तो आई एम गोइंग टू डू अल्टरनेट न्यूमेरिकल्स, लाइक ऑड न्यूमेरिकल्स करूंगा या इवन न्यूमेरिकल्स करूंगा। ऐसा कुछ आइडिया अपने को याद रखना है। तो टाइम टू टाइम रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सॉल्व चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स। देखो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, इवन मेरा ब्लॉग मैंने बनाया है PR एजुटेक करके, उसके ऊपर भी यू विल गेट अ चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स ओवर देयर, या आपका स्कूल्स में भी मिलेगा, क्लासेस में भी मिलेगा। तो वहां से लेके चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि वो हिसाब से आपका चैप्टर तो प्रिपेयर हो जाएगा। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो दिस विल गिव एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। Okay, final revision has to be done at the end, that is in the month of November and December. This is what you have to keep it in mind over here. Now for chapter wise question papers, आपको कुछ help चाहिए, PYQs, formula sheet, you please visit our blog prejutech.blogspot.com, जिसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को अपलोड करते रहूँगा। एंड फॉर मोर सच अ वीडियोज विजिट आवर यूट्यूब चैनल, it's very important, and do not forget to share and subscribe our channel for more such a video.